Hello everyone, welcome to Dakshana e-classroom program. Up to last lecture, we finished mathematical tools, which is also very important part for studying physics. In mathematical tools, we told you that it's just like a language to study physics. So you can imagine the importance that if you don't know the language, then how it is possible to study physics. So mathematical tool is the prerequisite to study physics. So I hope by this time everyone is finished or done with the mathematical tool part. Right now we are going to start physics. So physics basically it's in simple word, if I say, it's more about knowing the physical phenomena happening in the real life that we see in day-to-day life, the science behind them, is it? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने लाइफ में, बहुत सारे केसेस अपन देखते हैं, बट वी नेवर थॉट अबाउट इट्स लाइक कॉज और इट्स एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या है एग्जैक्टली, कैसे अपन उसको समझ सकते हैं, राइट ना। जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक मान के चलो एक कर्व्ड रोड है और आप व्हीकल एक फास्ट स्पीड से या एक स्पीड के लिमिट के बियॉन्ड अगर ड्राइव करते हैं, देन यू विल like your vehicle will skid actually, but you don't know the why it is skidding actually. By studying physics you will know the reason. Similarly, if you are throwing some object upward, you know, finally it comes down. We can know the reason why it comes down. We can also predict that how much time it will take to come down. So there are so many things actually, like sky is blue, is it? Twinkling of stars. Moon is revolving around the earth, and why it is not falling? Like अपन ने अभी बोला कि एक ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करते हैं then it fall down back on the earth. Why moon is not falling? And like right now in communication system, like we are like using mobiles and satellite and all that. तो can you just imagine कि satellite कैसे काम कर रहे हैं? Satellite को अपन ने sky में like उनको throw किया और basically project किया, and why they are staying there, और कैसे like अपन like उनसे communicate कर पा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आप अगर like interested है जानने के लिए, then all those things you can understand by studying physics. तो basically physics it's like very vast subject. It has like lot of things actually. तो उसके लिए like for better understanding purpose, it has been categorized into sub subject basically, and the part which we are going to study in 11th and 12th class part, that include these five basically sort of like you can say branch of physics. That is, one is mechanics, another is wave, optics, heat and thermodynamics, electrodynamic part, and modern physics. जो मैकेनिक्स पार्ट है वो बेसिकली बॉडीज और रिजिड बॉडीज के मोशन से डील करता है, जहां हम रिजिड बॉडीज के मोशन, उनका कॉज इफेक्ट वगैरह वो सब डील करेंगे. दैन वी डिफाइन दैट वी कॉल बेसिकली मैकेनिक्स. सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन ऑन of an object or rigid body or maybe deformable body, तो उसको अपन मैकेनिक्स डिफाइन करते हैं. तो मैकेनिक्स में हम सब लाइक पूरा ऑब्जेक्ट एक धक्का दिया, फोर्स लगाया, किधर लगाया, कितना लगाया, उसका क्या इफेक्ट आएगा, कितना एक्सेलरेशन आएगा, वो सब चीज़ें अपन इस पार्ट में समझेंगे बेसिकली. नेक्स्ट इसमें आता है वेव. वेव देखो, लाइक आई एम स्पीकिंग हियर एक्चुअली एंड वी आर लाइक यू आर एबल टू हियर इट, और लाइक म्यूजिक एंड ऑल दैट. तो ये सब चीज़ें अपन सुन पा रहे हैं, लेकिन ये क्या है? लाइक दिस इज बेसिकली जस्ट, अगर इसको अपन को समझना है देन इन फिजिक्स वी डिफाइन दिस बेसिकली साउंड वेव. तो ऐसे वेव दो तरह का होता है, साउंड वेव और एक स्ट्रिंग वेव बेसिकली, that we will study in physics part basically. तो ये क्या है exactly, कैसे ये propagate कर पा रहे हैं? आपने शायद सुना होगा that at moon you can't talk. Why we can't talk? Like, is it why we can't hear? So that reason we can understand only by studying that part. So that we basically study in the mechanic this wave part. Next comes optics. Optics is basically all about light. कि light क्या है? See, if there is dark, we are not able to see the things. Why we are able to see the things? Is it? And like anything or basically a lot of things about light, we will try to understand the behavior completely. क्या है particle nature, wave nature वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी when we will deal things in detail. So the optics is basically all about understanding
understanding the behavior of light. Similarly, next comes heat and thermodynamics. तो heat में basically like related to temperature when we are heating an object, is it? Thermodynamics also, like here we try to understand the behavior of gases. आपने देखा होगा कि लाइक काम है ना, काम करवाना है, क्या एक गैस काम कर सकती है बेसिकली, काम दैट टू फिजिकल वर्क, और काम का मतलब भी लाइक बेसिकली क्या है एग्जैक्टली, वी विल स्टडी दैट पार्ट आल्सो इन फिजिक्स. देन यू विल लाइक you will be ask like what is exactly or can we made a gas to do some work. So related to gas and heat and all that, we will study all those things in this part, that is heat and thermodynamics. Electrodynamics, it's also very important subject actually, where we deal about charge when it is at rest. तो वो electrostatic क्या effect create करता है, उन वो क्या है एग्जैक्टली, कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं दूसरी चीज़ों को. सिमिलरली व्हेन चार्ज इज इन मोशन, सी लाइक चार्ज मीन मोशन मीन्स योर इलेक्ट्रिसिटी. सो यू कैन इमेजिन without electricity right now life is like very difficult actually. You can't imagine the life also. Every day we are driven by the electricity, everything, is it? तो that all like electrodynamics में अपन उसके बारे में स्टडी करते हैं. तो इसमें करंट आ जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है, राइट. वो सब चीज़ें अपन लाइक जो प्लेन्स वगैरह हैं कम्युनिकेट करते हैं, दे आर एबल टू ड्राइव, इज इट, लाइक फ्लाई. सिमिलरली इन for navigation purpose we use like GPS and all that. तो वो सब चीज़ें क्या हैं, all those works based on some magnetic properties. तो like all these magnetic properties कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या हैं, we will deal all everything about that in this electrodynamic part. Modern physics में basically आता है कि like modern physics we will also know that why it is called modern physics. Actually this is about a electron, is it? तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर क्या हैं चीज़ें, और फिर उनका न्यूक्लियस का बिहेवियर, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, न्यूक्लियर रिएक्टर. तो वो सब चीज़ें, क्योंकि बाकी सब के कंपैरिजन में अगर हम लाइक बात करें तो ये जो पार्ट्स है दिस इज़ द लेटेस्ट डिस्कवरीज इन द फिजिक्स एक्चुअली. तो इसीलिए उन सभी लेटेस्ट डिस्कवरीज को अपन ने जो स्टडी है उसको मॉडर्न फिजिक्स का ब्रांच का नाम दे दिया है बेसिकली, राइट. अदरवाइज वी नो एक्चुअली इन मैकेनिक्स दिस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट, तो यहाँ पे मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया, आई टोल्ड यू दैट इट्स अबाउट चार्ज. बट अगर ये अबाउट चार्ज एंड दिस इज आल्सो अबाउट चार्ज बट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, so like then why we are calling this is mechanics or modern physics and this is electrodynamics. So the reason we will see that actually when we will be studying. So right now we will be only focusing on this part, so let's talk about it only. So mechanics kya hai, it's basically you can call this is a branch of physics where we deal about with the cause and effect of motion of an object or rigid body or a deformable body. तो वो सब पार्ट पे अभी अपन फोकस करने वाले हैं. सो नाउ वी विल फोकस मेनली ऑन मैकेनिक्स. हाँ, अगर मैकेनिक्स को फर्दर देखा है तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज स्टैटिक्स एंड अनदर इज डायनामिक्स. स्टैटिक्स का मतलब कि लाइक यही सब कॉज एंड इफेक्ट इज इट ऑफ फोर्स व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, तो उस पार्ट को अपन स्टैटिक्स बोलते हैं बेसिकली, और स्टैटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं. डायनामिक्स का है स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, उस पर फोर्स लग रहा है, उसका क्या इफेक्ट है, क्या कॉज कर रहा है, उन सब का लाइक स्टडी करना, तो उसको अपन डायनामिक्स पार्ट में. अब इसमें भी लाइक इसको फर्दर अपन ने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है. वन इज काइनेमेटिक्स पार्ट, अनदर इज काइनेटिक्स पार्ट. सो इन काइनेमेटिक्स पार्ट बेसिकली वी स्टडी अबाउट मोशन of an object without bothering about its cause, that is basically force and torque. In काइनेमेटिक्स पार्ट में अपन लाइक कोई बॉडी को कौन धक्का दे रहा है, कैसे, क्यों मूव कर रही है, किसकी वजह से मूव कर रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता है. एक बॉडी मूव कर रही है, एक मोशन में है, तो अब उसके मोशन के बारे में हम पूरा स्टडी करते हैं. सो दैट स्टडी बेसिकली मीन्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट bothering about, without going about the cause of motion. We call that kinematics part. Similarly here we talk about the motion with its cause, that is force and torque, then that is termed as your
kinetics part. So effectively, if we are saying it, then right now we are going to study about this part of basically physics. Okay, so let's continue from here, and in that we are going to see first the motion, or that too it's rectilinear motion. Okay, so let's see what is exactly motion, how we can define, how we can understand. Let me erase this part. तो अभी अपन फिजिक्स के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स में पार्ट में बेसिकली सब ब्रांच, and inside mechanics that is dynamics, and in dynamics also we are in kinematics part. तो अभी kinematics में पार्ट में अपन नाउ स्टडी करने वाले हैं मोशन के बारे में. तो देखो मोशन लाइक क्या है एग्जैक्टली, ये अभी अपन समझते हैं. तो मोशन को समझने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ें चाहिए, एंड दैट इज लाइक बेसिकली वन वी नीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. So what is frame of reference? Okay, frame of reference basically it's a system consisting of a coordinate axis. Okay, or we can define it is a set of coordinate axis attached to a system. मतलब समझो, ऐसे समझो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, अपनी एक्स वाई जेड एक्सिस, ये एक्सिस का सेट और एक सिस्टम से अटैच कर दिया जाए किसी भी से, तो उस पूरे को अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है ऑब्जेक्ट का मोशन और रेस्ट, ये टर्म्स को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए. ओके, एंड हियर अनदर कम्स बेसिकली इज ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर क्या है बेसिकली, एनी इट कैन बी लाइक ए पर्सन, इट कैन बी सम रिकॉर्डिंग डिवाइस विच कैन ऑब्जर्व सम फेनोमेना हैपनिंग इन द लाइफ और सम चेंजेस. तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए, सो दैट इज बेसिकली योर ऑब्जर्वर. सो यू कैन राइट हु ऑब्जर्व सम phenomena, is it happening in the, you can write frame of reference. Okay, so these are just two terms I defined. Let me now go for something like, okay, so let's consider we have here this system, and one object is basically placed here, right, something, and let's say three observers are observing this. Let me write, this is one statue of something, is it? So this is observer A, another observer is standing here, actually this me writing like B considering, and one more person standing here, and let me call it C, and this person is at a distance of, let's say, 4 meter, this is at 5 meter, and this is at, let's say, 3 meter. Let me define the reference or direction also. So I am considering this is north, south, east, west. Okay, now see, everyone is looking at this object, and if I am asking like what is a, where is this object with for you actually, so what, like everyone will comment on the position of this object basically with respect to themselves, is it? तो यहाँ पे जो A person है वो क्या बोलेगा, that object or this statue is at a distance of 4 meter from me, in which direction, and the direction is basically west for A. Similarly, B will be telling that statue is at a distance of 5 meter in the direction of south from me or with respect to me. Similarly, C will be telling you that statue is at a distance of 3 meter from himself in the direction of east. So the point is that who is wrong, because everyone is telling a different answer, is it?
can I say like which person is right and which is wrong? So let me first like position of statue. For A, it will be saying at distance 4 meter. Which direction? It's basically west. B, distance 5 meter south. Similarly, C, it's at a distance of 3 meter east. So the point is, who is right about the position of object, or that I can call statue? Is it? Because all three people are telling different things, is it? So like if this is like the situation, that what we can say, like who is right and who is wrong actually, and the answer in this case, all are right. So means the point here is that if we want to define the position, it's not in like absolute terms. पोजीशन अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफाइन करना है, देन यू नीड लाइक टू थिंग्स एक्चुअली. वन इज द डायरेक्शन, अनदर इज द डिस्टेंस. Okay, and position is defined with respect to some observer. So for this observer, this is the position of that statue, and that is correct. For this observer B, this is the position of statue, and this is also correct. For observer C, this is the position of statue, and that is also correct. So basically, position is not like only one quantity that for everyone it will be same. No, it depends on the observer. Is it? So here we can write, this implies position of an object depends on the ऑब्जर्वर. सेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकती है. एंड इफ यू वांट टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज इट टू डिफाइन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करने के लिए अपन को दो क्वांटिटी, वी नीड टू क्वांटिटी. वन इज द डिस्टेंस from observer, you can write of object. जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपन को डिफाइन करनी है, उसका जो ऑब्जर्वर है उससे डिस्टेंस. अनदर पैरामीटर इज डायरेक्शन. So means for one particular object, the position will be definitely different for different observer. Is it? So to define the position of an object, we need these two parameters. Okay, so basically the position of an object is defined with respect to, this is with respect to, I will be writing it WRT from next time onward, an observer, and it tells about the distance of object from observer. अभी आगे देखेंगे कि डिस्टेंस बेसिकली हेयर इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट आल्सो. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो अभी अपन आगे बात करते हैं. फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड
its direction. Okay, so this is basically your position. So in like this, in general term we defined it in east, west and all that direction, but there is one more convenient and even better system to define position of an object, is it? And that is much better actually. For that we go for one frame of reference actually. So let me consider this is my one frame of reference only in a plane 2D. So now if I am saying one object is here, this is your object, जिसका मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ x, y. तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, let's say this is O, where some observer is standing here, or I can write position of this object with reference to or with respect to observer standing at origin. तो ये क्या होगा, लाइक इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, बेसिकली this is x coordinate, x distance in this direction, then y distance in y direction, तो that will be like position. तो इनको vector form में, because you have already studied the vector, is it? तो position क्या चाहिए अपन को, distance भी चाहिए होता है, magnitude basically, ये displacement अब vector form में अपन लिखेंगे तो, and its direction. So the position vector here I can write position vector of object having coordinate x, y with respect to observer at origin. तो उसके लिए एक्सपेक्ट में मैं इसको अगर एक पोजीशन वेक्टर को r वेक्टर लेता हूं, तो r वेक्टर विल बी इक्वल टू x I cap plus y j cap. अभी because you have already studied the mathematical tool in, is it sorry, vector in mathematical tool, तो ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए आई थिंक. तो ये जो टर्म है ये आपको दोनों चीज़ें दे रहा है. इसका जो ये वेक्टर है इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ तो वो तुम्हें ये दूरी भी और ये डिस्प्लेसमेंट भी दे देगा. And this I cap, j cap, this is also in vector form, so it's also giving you direction. So that is how we can define position of an object, is it? तो पोजीशन के लिए अपन रेफरेंस फ्रेम, तो रेफरेंस फ्रेम में अपन बाय डिफॉल्ट यहाँ मान के चल रहे हैं कि ओरिजिन पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है. इफ इट इज समथिंग एट सम डिफरेंट पोजीशन देन इट विल बी स्पेशली मेंशन टू यू. ओके, तो अभी ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करने के लिए अपन को क्या चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट. अगर वो 3D में है देन वी विल रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट. ओके, सो दैट इज बेसिकली पोजीशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द टर्म कॉल्ड मोशन. So if I say an object is in motion, or if I say object B is in rest, what do you think about these two statements? Let me write. Okay, just one statement, object, just मैं ऐसे ही बोल देता हूँ. Let's say I am saying object A is in motion and object B is in rest. तो क्या, do you feel like these two statements can be true? Is it? Or so basically first I would say these statements are invalid. These doesn't make any sense actually. A is in motion, B is in rest. These statements are invalid. ये वैलिड ही नहीं है, प्रॉपर सेंटेंस ही नहीं है, इज इट? सो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि ए ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, बी ऑब्जेक्ट मोशन में है. टू डिफाइन द मोशन एक्चुअली वी नीड लॉट मोर, इज इट? सो व्हाट इज नीडेड, देखो, तो पहले अपन ने क्या किया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ने स्टडी कर लिया, ऑब्जर्वर अपन को समझ में आ गया और पोजीशन समझ में आ गई, इज इट? ऑब्जर्वर क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अटैच्ड पर्सन है, लाइक, और इट इज ऑब्जर्विंग द पोजीशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट. सो मोशन कैसे डिफाइन करेंगे, इफ फॉर वन पार्टिकुलर ऑब्जर्वर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम
अंडरस्टैंडिंग, लेट मी राइट इट दिस वे। ये अपने पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन पे मैंने ऑब्जर्वर भी अटैच कर दिया है ना, because I am going to define the position of an object with respect to origin। हाँ, आप किसी दूसरे पॉइंट पे भी ऑब्जर्वर को रख सकते हैं, there will not be any problem in that too। तो अभी मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर था, let's say at t equal to 0 it is here, okay, x1 y1। तो इसका जो पोजिशन वेक्टर at t equal to 0, पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये सब मैं किसके लिए डिफाइन कर रहा हूँ, फॉर दिस ऑब्जर्वर। ओके, सो फॉर दिस ऑब्जर्वर पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लेट मी राइट आर इनिशियल बार, दिस इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये मेरा पोजिशन वेक्टर हो गया, राइट। इफ दिस पोजिशन ऑफ एन object for this observer is changes to here after some time, so this is our initial and this is our, let's say, final, and this is at t is equal to some t naught x2 comma y2, and that is like t is equal to 0 to t naught, some very short स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी वो थोड़े टाइम बाद बदल जाती है। देन आई विल से फॉर दिस ऑब्जर्वर दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, बिकॉज देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट फॉर अनदर ऑब्जर्वर इज इट पोजिशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज constant, may not be changing, is it? So that's why, so motion, how we can define, so here this is the position of an object at t is equal to 0, I can write at t is equal to some t naught, position vector of object, तो ये लिख सकते हैं फाइनल पोजिशन वेक्टर, लेट्स से x2 i कैप y2 j कैप। तो ये हो गया अपना फाइनल पोजीशन वेक्टर, राइट। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ऑब्जर्वर के लिए इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के हिसाब से बदल रहा है, दैट्स व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन फॉर ऑब्जर्वर। सो लेट मी राइट दिस इज ऑब्जेक्ट A, okay, and finally reaching this is observer O1। So now I can write basically motion So what is motion actually? If position of an object is changing with time for an observer, then the object is said to be in motion for that observer, is it? तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए अपन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। सो is it for that observer in fixed frame of reference। fixed का मतलब कि like in this frame of reference, okay, so that we can define। तो इसमें आप देख सकते हैं ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि एक ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम पे पर्सन 1 के लिए मोशन में हो सकता है, सेम ऑब्जेक्ट एट सेम टाइम फॉर पर्सन 2 और ऑब्जर्वर 2 मे बी एट रेस्ट, इज इट? सो दैट्स व्हाई वी कांट
simply tell that object A is in motion. This is a completely invalid statement. तो अब अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन या रेस्ट डिफाइन करना है, यू नीड टू हैव वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और बेसिकली वन ऑब्जर्वर, एंड इफ with respect to that observer the position of an object is changing, you will define that object is in motion. If it is position is not changing, पोजीशन भी आपको समझ में आ जानी चाहिए. इज इट? पोजीशन मतलब कि लाइक उसकी दूरी, डिस्टेंस एंड इट्स डायरेक्शन. इज इट? अगर ये दो पैरामीटर आपके लिए चेंज नहीं हो रहे हैं तो मतलब कि आपके रेस्पेक्ट में या फिर आपके लिए वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा. कैन यू इमेजिन एनी सच एग्जाम्पल वेयर वन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट फॉर ऑब्जर्वर 1 and for observer 2 it is in motion at same time? Yes, that is also possible. Let me give you one simple example for that. Okay, so let's consider we have a situation here, right? So this is one compartment, or is it, of some like ट्रेन का एक है डब्बा. तो इसमें लेट सपोज डिफरेंट पीपल आर, सो लेट मी कंसिडर दिस इज ए and here it's basically B, and this is moving, let's say, with some velocity V, is it? And we have another observer here C. This is at V equal to 0. So means this observer is simply standing at ground. You can write standing at ground. And these two observers both are sitting in the train compartment, and this compartment is moving with velocity v. Now see, for this, like I am talking about, this is my object. ओके, ए. तो अब बी देख रहा है ए को, इज इट? सो फॉर ऑब्जर्वर बी, अभी देखते हैं कि बी को क्या दिखाई दे रहा है. सो एज टाइम पासेस, इज इट? डू यू थिंक द डिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी चेंजिंग विद टाइम? आई थिंक इट्स नॉट. डू यू थिंक इनिशियली अगर मैं बोलता हूँ कि ये इसके सामने है तो क्या थोड़ी देर बाद ये इसके पीछे चला जाएगा, या राइट में चला जाएगा, या फिर लेफ्ट में चला जाएगा? बोथ आर सिंपली सिटिंग इनसाइड द ट्रेन कंपार्टमेंट. सो डेफिनेटली यू कैन इमेजिन हियर द पोजिशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और आई कैन से पर्सन ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. इसीलिए इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ए पर्सन या ए ऑब्जेक्ट बी के लिए क्या है? रेस्ट में है. Is that clear? Right? So definitely I can say as position of B is, sorry, position of A is not changing for with respect to observer B. So that's why I can say, that is why can say object A is at rest for B. तो B के लिए A क्या हो गया? रेस्ट में हो गया. एंड फॉर ऑब्जर्वर C, अगर मैं C की बात करता हूं तो यहां पे देख सकते हैं अगर t इक्वल टू 0 पे ये यहां पर है तो थोड़ी देर बाद ये ट्रेन कंपार्टमेंट इधर पहुंच जाएगा. सो डेफिनेटली यू कैन सी द पोजीशन, द डिस्टेंस इज चेंजिंग, इवन द डायरेक्शन विल बी आल्सो चेंजिंग. तो इसीलिए क्या क्या बोल सकते हैं कि C के लिए क्या हो रहा है? A की पोजीशन चेंज हो रही है, एंड दैट्स व्हाई डेफिनेटली फॉर C ऑब्जेक्ट A इज इन मोशन. सो हियर आई कैन राइट फॉर C द पोजीशन of A is changing with time, right? For observer C.
तो C के लिए क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर C के लिए A की पोजीशन टाइम के हिसाब से बदलती जा रही है. सो दैट्स व्हाई आई कैन से ऑब्जेक्ट A is in motion for observer C. So that is basic definition of rest and motion. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर किसी ऑब्जर्वर के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के हिसाब से नहीं बदल रही है तो उस पार्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा. And if position is changing with time, then we can say that object will be in motion for that observer. We can't simply say that object A is in motion because किसके रेस्पेक्ट में, किसके लिए मोशन में है, that is also इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो अभी अपन आगे चलते हैं कि अपन ने ठीक है मान लिया ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एंड लेट्स से एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद टाइम. देन वी वांट टू स्टडी मोर अबाउट इट. ओके, चेंज हो रही है तो अब क्या है, कैसी रेट से चेंज हो रही है, कितनी रेट से चेंज हो रही है, कैन बी प्रेडिक्ट कि थोड़े टी टाइम बाद वो कहाँ पर होगी, वो सब चीज़ें क्या हम कर सकते हैं. येस वी कैन डू एंड लेट्स गो फॉर दैट एक्चुअली. सो लेट मी erase it first all. So I hope by this time the term motion and rest should be clear for you, is it? So now we are going to see more about the motion. So in this case, okay, यहाँ पर next we are going to define is पोजीशन अपन ने डिफाइन कर दिया. पोजीशन अपन एक्स वाई जेड ये सब पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट ही टर्म्स में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन कर देते हैं एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, जो कि अपन मान ले रहे हैं बाय डिफॉल्ट दैट ऑब्जर्वर इज सिटिंग एट ऑरिजिन. सो जो पोजीशन चेंज होगी देन ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन. इफ इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग फॉर दैट ऑब्जर्वर देन ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट. नाउ देखो जो पोजीशन चेंज हो रही है दैट कैन चेंज इन डिफरेंट वे एक्चुअली. सो वन इज लाइक वी कॉल मोशन इन वन डायमेंशन, right? Means if only one dimension, one coordinate of position vector is changing with time, you can say the motion of an object is in one dimension, or we call that rectilinear motion. So we can write when only one coordinate of position vector of an object is changing with time, the motion is said to be rectilinear motion or motion in 1D, one dimension. तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाता है दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन. एक अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई जा रही है चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज मोशन इन वन डायमेंशन. दिस इज आल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, इज इट? सो मोशन इन 2D, 2D का मतलब two dimension. So when both coordinate of position vector and object are changing with respect to time or with time, then object is said to be in, or the motion of the object is in 2D, is it? So
the motion of object is said to be in two dimensions। जहाँ पे दो कोऑर्डिनेट किसी ऑब्जेक्ट के जो पोजीशन वेक्टर है उसके एक साथ चेंज हो रहे हैं विद टाइम, तो उस टाइम पे जो बॉडी का मोशन होगा दैट विल बी लाइक मोशन इन 2D। तो इसका एग्जांपल रहता है बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी अपन आगे देखने वाले हैं, है ना। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन, और यू कैन राइट सिंपली ए बॉल थ्रोन इन द एयर, इज इट। तो वो मोशन बेसिकली अपना 2D मोशन में डिस्क्राइब किया जा सकता है। वी विल डिस्कस दिस। सिमिलरली मोशन in 3D, so you can simply understand it when all three coordinate of position vector are changing with time. The motion is said to be in 3D। जब तीनों कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहे होंगे तो उस टाइम पे अपन बोलेंगे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन 3D। सो बेसिकली यू कैन राइट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर। This can be one of the example of motion in 3D depending on exactly, okay। तो अभी जो अपन बात करेंगे that is only limited to again this, right। So we are now only going to talk about this motion in 1D। just for like this few cases we may see some another like 2D or 3D terms also just for understanding purpose, but mainly this chapter is limited only about motion in one dimension। So let me erase these terms actually, and we will see only motion in one dimension। तो देखो अभी अपन ने क्या किया, ऑब्जर्व मोशन डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, पोजीशन इज इट एंड डायरेक्शन, दैट टू वन मोर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम पोजीशन और डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, एंड दैट विल लाइक बेसिकली इफ पोजीशन इज चेंजिंग देन वी विल कॉल ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो अभी जब ऑब्जेक्ट ये मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, observer at O, and one object is moving from this is A to B final, this is initial position vector and this is final position vector, clear ना। तो एक ऑब्जेक्ट मान चलो यहाँ से इस पाथ से ऐसे ऐसे A से जा करके this is at T is equal to T1 and this is at T equal to T2, करेक्ट ना। तो अभी ये ठीक है, पोजीशन कोई ऑब्जर्वर जो कि ओरिजिन पर बैठा हुआ है, तो उसके रेस्पेक्ट में डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर है, लेट्स से ऑब्जेक्ट O1, तो उसकी पोजीशन इनिशियली A से B चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो ऑब्जेक्ट O1 है वो क्या है, मोशन में है। जब मोशन में है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट इन डिटेल कि मोशन में है, देन व्हाट एल्स वी कैन डिफाइन अबाउट इट। सो वी कैन डिफाइन टू मोर थिंग्स एक्चुअली पैरामीटर, वन इज कॉल्ड डिस्टेंस, is it। so what is distance actually? तो distance यहाँ पे जब ये O1 A object A से B गया, and you can see this is moving along this path, is it। so the total distance traveled along the path, is it, basically we simply call that as distance, or you can write this is the total path length, is it, along which the object
ट्रेवल्ड। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक इस पाथ के अलोंग ट्रेवल किया है, तो इसकी जो टोटल पाथ लेंथ होगी वी विल डिफाइन दैट एज डिस्टेंस, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर दैट। डिस्टेंस के लिए तुम्हें नहीं चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में गया है, वो किस डायरेक्शन में गया, किधर नहीं गया, डजेंट मैटर, ईस्ट वेस्ट राइट राइट लेफ्ट एनी डायरेक्शन, इट्स सिंपली टोटल पाथ लेंथ, दैट विल बी योर टर्म्ड एज डिस्टेंस। इसको अपन जो ऐसा यूनिट है दैट वो मेजर करते हैं अपन मीटर में, symbol m. Is it? Similarly, we define basically another term, parameter, that is called displacement. So what is exactly displacement? तो यहाँ पे देख सकते हैं the you can write it as so shortest path length, is it, or the shortest distance basically between initial and final position, we will call that as displacement, is it? So displacement क्या है basically, you can write this is the shortest path length between initial and final position of object. Or another thing is displacement we define is a vector quantity actually. तो ये r initial है, so जो यहाँ पे displacement vector अगर मैं a b bar इसको लिखता हूँ, this will be the displacement vector, this is given by r final vector minus r initial vector actually, right? This is your displacement vector, so this is the shortest path length. तो अगर ये a से b जा रहा है तो what is the shortest path length actually? Can you just imagine, this is the shortest path length, so this is a observer O1. तो अगर ये सीधा यहाँ से यहाँ जाए, that will be like your shortest path length, and this path length itself is simply termed as your displacement vector. और इसका क्या है डायरेक्शन, because displacement is a vector quantity, so we should define its direction also, कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, so it's moving from A to B, is it? Let me just before going more about these two terms, let me just consider one example actually. Okay, so we have this, let's say, semicircle, and this is complete circle, let me make it semicircle. तो ये अपने पास एक semicircle है, इसका let's say its radius r is equal to 50 meter. This is a B, and here I am defining some point C, and this is O, center. Now I have two objects, one P is moving this way and Q object. So object, we have objects P and Q. You can see in the diagram actually P is moving simply from A to B and Q is moving from A to B via point C, is it? So now, and the radius is also given to you, is it? So now you are asked to simply find distance and displacement for P and Q, because right now I am just trying to make these two terms clear to you. So now I am asking you, find the distance and displacement for both objects P and Q. दोनों ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पूछा गया है.
I think this is, if these two terms are clear to you, then you should be able to answer it. But anyway, let me explain it so that there should not be any confusion about these two terms actually, distance and displacement. तो यहाँ पे देखो, मान के चलते हैं पहले for point P और for object P. P के लिए देखेंगे तो P कहाँ से कहाँ जा रहा है, A से B जा रहा है, और ये जो भी है path length, what will be this path length? This I can write 2r is the path length, is it? और straight line में A से B मूव कर रहा है, so I can write distance covered. Distance means actual path length, तो distance कितना हो जाएगा 2r, that is equal to 100 meter for P. Displacement क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए अगर ये P की मैं बात करता हूं तो P कहां से गया है, A से B सीधा स्ट्रेट पाथ, तो क्या कोई ऐसा आप दूसरा पाथ इमेजिन कर सकते हो जिसकी लाइक A से B जाने की जो लेंथ है वो इससे भी छोटी हो? And the answer is definitely not. It's the only smallest possible path length. तो इसीलिए जो displacement है P के लिए A से B जाने का, वो भी क्या हो जाएगा, that is also 2r and that is also equal to 100 मीटर. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो P ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्या हो रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम एक्चुअली. लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट Q आल्सो. सो फॉर ऑब्जेक्ट Q, अगर Q की बात करते हैं अपन, तो Q जा रहा है A से B वाया पॉइंट C, इज इट? तो देखो Q के लिए व्हाट इज पाथ लेंथ, बेसिकली दैट इज डिस्टेंस. तो डिस्टेंस मींस पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ तो क्या हो जाएगी, इट्स मूविंग अलोंग दिस कर्व, इज इट दिस. सो व्हाट इज दिस पाथ लेंथ, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, पाई इनटू r. तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज पाई r एंड दैट्स कमिंग आउट टू बी 50 पाई मीटर. तो ये क्या हो गया इसका डिस्टेंस. अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं सेम Q के लिए, सेम एंड फॉर Q, तो डिस्प्लेसमेंट देखो Q कहां से जा रहा है, A से B वाया दिस पाथ. क्या अपन यहाँ पे कोई दूसरा पाथ इमेजिन कर सकते हैं जिसकी पाथ लेंथ इससे छोटी हो और वहाँ भी सेम A से B जाया जा सके? एंड द आंसर इज यस, डेफिनेटली. इफ वी आर मूविंग straight forward from A to B along this path, that will be the shortest possible path length. So that's why for Q the displacement will not be simply this path length. For Q the displacement will be A to B this path length, and I can write, so displacement for Q is 2r and that is equal to 100 meter. So Q के लिए बोल सकते हैं कि displacement क्या हो जाएगा, that will be different because the shortest possible path length is AB for Q actually. So Q के लिए displacement अपना ये हो जाता है. So I hope this example and these two terms should be clear to you, the difference between distance and displacement. Let me tell you more about these two terms, the difference between these two, and also so distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Okay, so difference between distance and displacement. तो यहाँ पे अभी अपन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ओके, आई होप
you remember things from the vector mathematical tool. तो अपन ने देखा था कि vector it can be negative, positive, zero also, and so that's why. So first point, it is the actual path length, is it, between initial and फाइनल पोजीशन. अगर एक ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक मूव कर रहा है तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ जो भी है वो जिसके अलोंग मूव करके गया है, दैट एक्चुअल पाथ लेंथ विल बी योर डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल path length between initial and final position. That is termed as your displacement. Second term, it is a scalar quantity, and this is a vector quantity, is it? So definitely we can write it's scalar, वो भी काफ़ी है, but I can write it does not have direction. You can write here it has direction also. डिस्टेंस आप सिंपल लाइक दूरी 5 मीटर 10 मीटर डिफाइन कर सकते हो. फॉर डिस्प्लेसमेंट यू कांट सिंपली राइट ओके 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, नो, दैट इज नॉट कंप्लीट. यू नीड टू राइट 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 5 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन. दैट विल बी कंप्लीट like term called displacement for like writing purpose. So it can not be 0 or नेगेटिव. जीरो एक्चुअली में उस केस में हो सकता है जब ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे. सो बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव बेसिकली, दैट इज बेटर. इट कैन नॉट बी नेगेटिव एंड दिस इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आल्सो. एक तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए बिकॉज दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में आपको पढ़ाया गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. सो डेफिनेटली आई कैन से डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो यहाँ पर भी वो सब चीज़ें एप्लीकेबल हैं. बाकी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है ये भी अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे अभी. ओके, सो इफ़ यू वांट आई कैन लाइक इवन जस्ट फॉर स्मॉल इज इट एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव यू. एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, लेट्स सपोज, and if let's suppose after moving and it's returning back to its initial position, in this case its distance will be actual path length. तो वो कभी जीरो नहीं हो सकता, but displacement is initial and final position, so the shortest distance between them is zero. So in this case your displacement will become zero actually. Similarly अपन क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ ये t इज इक्वल टू 0 पे अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, मतलब ये है कि अगर वो इधर जा रहा है तो जो भी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी पॉजिटिव. लेकिन वो मान के चलते हैं यहाँ जा करके फाइनली लौट करके इधर आ जाता है. सो दिस इज इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज फाइनल पोजिशन. तो ये फाइनल पोजीशन है वो जो पॉजिटिव डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में है, तो दैट इस सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपना नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव तो आपको समझ में आता ही है. इफ दिस पार्ट स्टिल नॉट क्लियर, नो नीड टू वरी, जस्ट वेट, आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट
again later. Okay, so we will talk about positive, negative and sign convention. In that case it will make sense to you better. So it can be positive, negative and zero. It can be cannot be negative. Positive and zero it can be basically. Fifth, it is always greater than or equal to displacement. Either distance will be equal to displacement or greater. It cannot be smaller than displacement. So this point basically makes sense for both. Distance, it is always, so basically distance, यहाँ पे आप लिख सकते हो displacement, it is always smaller or equal to distance. जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा आइदर डिस्टेंस के बराबर होगा और उससे छोटा होगा, कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता. ये देखो इस केस में देख सकते हो कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. हाँ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, लेट्स से अगर ये यहाँ से बी, ए से बी जाता है, ये अभी आपको एक एग्जांपल में भी बताए थे. इफ दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन दिस स्ट्रेट लाइन, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं, राइट. So this is more about basically distance and displacement, scalar, vector, positive, negative, is it? All those terms, you know, to greater, equal. So these two things, like these things you should keep in mind. Then that will be like making everything clear for you about this distance and displacement, two terms. And so this is basically change in position can be measured in two ways. One is distance, another is displacement. Let's continue with this part. Let me erase it. Okay, so let's stop this lecture here. We will continue from here onward in the next class. Thank you. Read it properly, carefully.